डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट के हाउ राजू हिरानी मेक्स मूवीज़ के पहले वीडियो में हमने उनकी एडिटिंग, राइटिंग और एड वर्ड से मिली टेक्निक्स को एनालाइज किया था। इस वीडियो में हम उनके मूवी आइडियाज़ और स्ट्रक्चर को बारीकी से समझेंगे। ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि राजू हिरानी की फिल्मों में सोशल मैसेज ज़रूर होता है, चाहे वो संजय दत्त की बायोपिक ही क्यों ना हो। उसमें भी उन्होंने सेंसेशनलिज्म से बचने का मैसेज दिया था, बट आयरॉनिकली लिखते समय उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। Most films, barring PK was a film where actually I wanted to say something about religion. Most other films I actually didn't set out to give a message. If you look at Munna Bhai, MBBS, or if you look at Three Idiots, clearly they didn't start with any social message. In fact, when we step out, we've never stepped out to say, when we never begin a film saying, okay, now this is a social issue which we want to tackle. There's this whole perception where people feel I do film only with messages. मुझे लगता है बहुत मुश्किल है एक्चुअली वो काम करना, सबसे कठिन है। Whatever we've strongly believed in, that has seeped in. Like हम 3 Idiots बनाने निकले तो हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम एजुकेशन के ऊपर कुछ मैसेज देंगे। Those things came in about education because I believed it like that. Like when we were writing 3 Idiots, the idea was to create a world of a life in a hostel. I had lived in a hostel and I wanted to recreate that. You know, it's a hostel life, I've lived that kind of a life, students, fun. But possibly inside us there was this little outrage about the way education is. Yes, there is an amount of angst. There was some angst against the education system I had. So all that was there, so it seeped into Three Idiots. So that kind of crept in the script when we started writing it. That came out in some way. So these are things which we believed in, they kind of tend to come into our films. तो वो बिलीव शायद निकल के आ गया। But the idea is not that we go out and just preach. It'll become a very boring world if every filmmaker starts doing that. There's no conscious effort to say, okay, now let's find a subject and let's make a social comment over it. कमेंट बात तो पॉइंट अच्छा है कि ये सीन लिखने बड़े मुश्किल होते हैं। तो आप सोशल मैसेज कह रहे हो, वो एक्चुअली उसको एंटरटेन भी करना और डिलीवरेबल करना बहुत कठिन जाता है। But I think all these things happen very subconsciously. I think I'm done with messages. ऐसा कुछ नहीं है शायद कभी फिल्म बनाऊं जिसमें कुछ भी मैसेज नहीं देना चाहूँ, सिर्फ एक एंटरटेनिंग। भले ही स्क्रिप्ट की शुरुआत में नहीं, बट लिखते लिखते अभिजात जोशी और राजू हिरानी की मैसेज को लेकर प्रायोरिटी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार उन्होंने स्टोरी के थोड़े बहुत लॉजिक को इग्नोर भी किया है। I mean, कभी तुम लोग को पीके देखते समय ये नहीं लगा कि जग्गू सिर्फ एक लेटर की वजह से अपनी जिंदगी के प्यार को कैसे छोड़ सकती है, या फिर रैंचो इतना बड़ा रूल ब्रेकर होने के बावजूद श्यामल दास की शर्त 5 साल तक कैसे मान सकता है। For us, it was a kind of a MacGuffin. All we tried to do was to make that very, very convincing as much as we could. You know, finds the same letter. That's why he doesn't call. He's shown to be a respectful person, really a real gentleman who thinks that he is under tremendous pressure and I don't want to push it. It's a part of his character. After our conversation, actually, I started thinking about Three Idiots. And I realized that there I'm not convinced that Rancho would never get in touch with his friends because he's a free thinker. And he would not abide by the rules to a vow which is of no consequence to him. Gentleman has got his degree. Now he doesn't have to be for 5 years away from the girl that he really loves. But you know what happens is that these things don't matter. And that's what I've learned. Like in Lage Raho, Munna Bhai, he calls at a certain time, the radio station. And at one point we realized that how does Jimmy Shergill know that Munna will be at the radio station at this time? And we realized that nobody else in the world is going to think about it. As long as we engage them. I'm not saying logic is not important. Yeah. Logic is important. But what happens if you try to create logic to match that? You are actually disengaging the audience. Right. You are spending 30 seconds of screen time to get the logic right, which is actually disengaging them from drama. उनके फिल्मों के थीम्स भी सबकॉन्शियसली ही बाहर आते हैं। I'm not consciously doing it. I'm not making it into a formula for success at all. If that was my formula success, it is very dangerous. If somebody will try to adapt it, unless they're feeling it from the heart, I can assure you they will fail. These themes are completely coming from the heart. That's the way I have lived my life. So I believed in these things, and that's the reason, only reason I've gone and done these films. राजू हिरानी को अपनी फिल्मों के आइडियाज भी बहुत अलग अलग तरीकों से आए। You know, I was a terrible student. I did science till 12th. मेरे काफी दोस्त थे जो मेडिकल स्कूल में चले गए। Medical school or engineering school. I didn't have marks enough to get into any of them. So I had to even really struggle to get into a commerce school. मेरे पास बहुत वक्त हुआ करता था। कॉलेज मैंने कहा 3 घंटे का होता था, तो मैं उनके हॉस्टल में चला जाता। I would stay with them in the hostel. So I used to go and spend time in the medical college with them in Nagpur. जब मेरा क्लास कहीं चल रहा है तो एनाटॉमी का म्यूजियम है या कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो थोड़ा देर वहाँ टाइम स्पेंड करके, जो शायद नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं जा पाए, वहाँ हम लोग चले जाया करते थे। उनके हॉस्टल में जाके बैठता था, उनके साथ रहता था। Fascinating world of stories. I saw amazing things. वो अजीबो गरीब चीज है। In one of the hostel room, they had an ashtray which was like a skull. वो एक स्टूडेंट था
उसके रूम सिगरेट पी रहा था और ऐसा करके वो अपना सिगरेट स्टफ करता था, तो वो एक स्कल था. Skull, like imagine cut like this, so it's a face sitting there, and people are tipping their ashes in that. All this. मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा स्कल है यार, ये कहाँ से लाया है? ऐसा बड़ा एस्ट्रे ऐसा मैंने कभी देखा नहीं स्कल के शेप में. Fantastic, but it looks real. तो कहता नहीं, स्कल ही है, रियल स्कल है वो. So they used to actually, for the anatomy lectures, they used to buy these skulls, and they were real. तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सर जिसमें वो सिगरेट बुझा रहा है वो एक्चुअली कुछ साल पहले किसी आदमी का सर था. This was actually the head of some guy who didn't know, he'll become an actor someday. Yeah. And I was thinking that I'm doing commerce, I'm supposed to do something, I'm supposed to do business, I'm supposed to make money. And doctors are here compassionately to serve people. But what I saw there was very funny. I thought that nobody was really wanting to serve people. फिर एक दिन में मुझे डिसेक्शन रूम में लेके गए. एक दिन मैंने उसमें पोस्टमार्टम उन्होंने दिखाया मुझे. Like even my friends would stand and, when you're in your second, third year, they would watch people go and say, okay, let's analyze what disease this guy has got. They'll see a fat guy and say, okay, high cholesterol. I think in 3 years he'll give us a Maruti car. We'll have it. तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड लगा कि यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही थी और ऐसी ऐसी चीजें हो रही, लोग कॉरिडोर में सो रहे हैं और रोना भी आ रहा था उनके साथ. और चूंकि मैं प्लेस करता था, Write, direct, act, everything. तो वो एक आदत थी डायरी में कोई इंटरेस्टिंग चीज मिलती थी उसको लिख के रख देने की. So I always would have this little diary and any funny incident, Anything which seemed interesting. I would kind of note it down. तो मैंने बहुत सारे चीजें नोट की जो मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड थी. ये रैगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली सिर्फ मुन्ना भाई में नहीं, इवन 3 इडियट्स में भी जो डाला हुआ है, वो जो यूरिन करते हैं और वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा रहता है, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में ये बहुत कॉमन चीजें हैं. And also in that period, At that moment I was meeting lot of doctors for various reasons. काफी डॉक्टरों से मैं मिला था और कुछ ऐसे किस्से हुए थे लाइफ में. within my family, there were some people who were unwell, so I got really exposed to doctors. And I was seeing that not everything was right within the medical fraternity. I actually really don't want to criticize them, but I saw some kind of lot of corrupt practices there. Not that all doctors were like that, but some of them were like that. So there was a kind of a desire, some angst to hit at them. Okay, थोड़ा सा anger था उस तरफ. So there was a little anger with the medical community. Almost trying to say that if you don't have the compassion, don't be a doctor. तो वो किसी ढंग से कहना चाहता था, तो वो आया उस कहानी में. फिल्म की फेमस जादू की झप्पी का आइडिया भी राजू हिरानी को रियल लाइफ से मिला. तो जादू की झप्पी कहाँ से आई? जादू की झप्पी 2 लोगों से आई. One is my dad, who is very warm hug. हाँ, वो मिलेंगे तो हक करके ही सबसे मिलते हैं. दूसरा विनोद से. विनोद also is a man who is very physical. Expression of love is there. मैंने उसको गले लगा लिया. मैंने कहा यार कमाल है. And Raju told me much later कि that was his जादू की झप्पी है. तो वहाँ से आया फिर जादू की झप्पी. राजू हिरानी ने मुन्ना भाई MBBS के काफी अलग अलग ड्राफ्ट्स लिखे थे. And the first story is always the most difficult one to write, I feel, because you're looking for that perfect story and you want it to be right. So this is a story I had while I was growing up in Nagpur, my first film, Munna Bhai MBBS, but not in this form. So I wrote a script about 3 medical students. It was anecdotal in nature. So there were many funny anecdotes. So I was never completely happy with it, and it lived with me for a long time. Then at one stage I wanted to make a television serial out of it. Didn't happen. Eventually, I said, okay, let's not make this film about these 3 students. many drafts later, I wrote one story about a gangster. वो भाई किस्म का आदमी है. What if a gangster was to go into a medical college and wanting to become a doctor? It was a completely different script. तो फिल्म शुरू होती थी, उसके सर में दर्द होता है. Severe headache. Goes to a physician. वहाँ से रिपोर्ट आती है, कहता नहीं यार ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसको भेज देता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आँख चेक करवाने के लिए. Who checks his eyes and sends him for an MRI. Some more CT scans, MRI. Who sends him somewhere else? Who sends him somewhere else? वो बेचारा दिन भर घूमता रहता है. He goes through series of doctors, and Next day, this guy gets okay anyway. he realized it was just a hangover. मगर उसे एहसास होता है यार ये मेरे हैंगओवर का इन डॉक्टरों ने मेरे ऊपर कितने पैसे कमाए. And figures out that these guys are as big crooks as he is. So he wants to become a doctor. This guy decides, he says, I'll go into medical school and become a doctor because money even I make, money even these guys make. मगर मैं इज्जत नहीं कमाता हूँ, ये लोग इज्जत भी कमाते हैं. these guys have respect. तो वो कहता है मैं मेडिकल स्कूल में जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा. So he wants to become a doctor because he wants to earn that respect. मुझे पैसे भी कमाने, इज्जत भी कमानी है. अपनी तो कोई इज्जत है ही नहीं, खाली डॉक्टर की इज्जत होती है. So I wrote a very hard-hitting satire on the medical profession, which was against doctors. So it started from there, but then I realized maybe it's not right to blame the whole fraternity. There are lots and lots of good doctors too. there are plenty of good doctors who I've seen. So kind of actually toned it down and made it a story about a gangster who's wanting to go to a medical school because his father always wanted him to be a doctor. इसके अलावा राजू हिरानी ने MBBS का एक और ड्राफ्ट सोचा था जिसमें एक पेशेंट हॉस्पिटल में 2 साल रहने के बाद मर जाता है और फिर भूत बन के इन डॉक्टर्स को डराने आता है. फनी होने के बावजूद ये ड्राफ्ट भी राजू हिरानी ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसमें कोई सोल नहीं था जो अल्टीमेटली मुन्ना भाई के कैरेक्टर में मिला. महात्मा गांधी ने राजू हिरानी के दिमाग में बचपन से ही केमिकल लोचा कर दिया था. शायद तभी वो गांधी जी पे फिल्म बनाने को हमेशा से ही इंटरेस्टेड थे.
It happened actually when I saw Richard Attenborough's Gandhi. That was the first time actually I woke up to the fact, who is this man? And that inspired me to go back to know more about him. And then I remember picking up a lot of books on him, his own autobiography. And then what happens when you read about a person, you realize the stature of that man, what he did, the way he thought, his philosophy. Then you want to talk about him all the time. फिर कभी दोस्तों से मिलता था तो मैंने देखा था गांधी बैशिंग एक फैशन बन गया था. They would rubbish the whole thing. अरे कोई भी कहता है अरे वो गांधी जी की वजह से हमारा पार्टीशन हुआ. Gandhi was responsible for the partition that happened. Gandhi was, his ways won't work today. That was okay. Non-violence in today's times of terrorism won't work. And these kind of things you'll encounter. उनको थोड़ा सा कुरे दो, उनसे पूछो कि क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है, तो पता लगता था कि वो सरफेस पे ऐसे ही कह रहे हैं. I think that time in the film institute, and I would get very worked up with that. And how can you talk about Gandhi like you don't understand the man, you're not understanding it. तो मैं कहता था आप जानते नहीं हो इस बारे में, आप क्यों कमेंट कर रहे हो? आप सुपीरियर फील करते हो बोल के ऐसा कि आपको लगता है जी मैंने एक बड़े आदमी को मैंने कुछ बोल कह दिया तो. So anyway, this happened, but somewhere all that stayed back. इनिशियली राजू हिरानी के दिमाग में मुन्ना भाई का सीक्वल आया ही नहीं था. वो तो एक सेपरेट गांधी स्टोरी पर काम कर रहे थे. I actually never wanted to do a sequel. Sequel बनाना ही नहीं चाहता था. मुझे sequel तो concept ही नहीं था, उस टाइम sequel बनते भी नहीं थे, कुछ नहीं होता था. After I made my first film, Munna Bhai MBBS, then somehow I felt like doing something about Mahatma Gandhi. And I said, no, I can't make a film better than what Richard Attenborough has done as a biopic on his life. Let me do something else. The core thought that struck me then was that how would have Gandhi seen this country? If Gandhi was alive in 98, 99, would he value this independence, or would he wonder, is this a country he fought for? So that was a core thought that came to me. So I wrote a script. जिसपे काफी टाइम तक 6 महीने तक काम किया, जो गांधी जी को लेके एक आदमी के बारे में थी जो hallucinate करता है. Small boy who hallucinates about Mahatma Gandhi. Young boy, an 8-year-old in 1940s who's a great Gandhian, who's a Gandhi follower, follows him on every Padyatra. One day he gets hit by a British soldier's baton and goes into coma. And straight cut, he wakes up 50 years later in a multi-storied hospital in Bombay. He's an older man now. He's been in coma for 50 years. And when he wakes up, he happens to still hallucinate about Gandhi. And the doctors feel it's a medical miracle, so they don't want to tell him that Gandhi is not alive. So they tell him he's alive, he's out there, he's gone somewhere else. And pretty soon this guy discovers that he's gone, but he hallucinates about him. And so the whole idea through this was that these two people, when they will meet, they will talk about independent India, and through him I would want to say whether this is the country Gandhiji fought for. We worked on that idea for almost 6 months, पर वो कहीं जा नहीं रही थी. It didn't go anywhere. ऐसा लग रहा था हम कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर बहुत सीरियस ढंग से कह रहे हैं. Wasn't really saying anything. It was just getting cynical about the world we live in. So I dropped it. I started writing something else. फिर फाइनली मुन्ना और महात्मा को मिलाने का आइडिया एक मॉर्निंग वॉक में क्रैक हुआ. So I used to take this little morning walks, and one morning, one day this thought struck at, what if Munna Bhai was to meet Mahatma Gandhi? What would happen? Instead of that little boy, if Munna Bhai was to meet Mahatma Gandhi, what would happen? तो हम मुझे लगा कि हम वही बात कह पाएंगे गांधी जी के बारे में, मगर बहुत फन वे में कह पाएंगे. So suddenly the contrast became too interesting. That here's a gangster who's a violent guy, and here's a non-violent man from history. इन दोनों को मिश्रण से कुछ हो जाएगा. And I couldn't recall any film which has actually taken a fictional character and a real-life character from history and put them together with different ideologies. What would happen? So I continued walking. I remember that came an extended walk, and the first 20 minutes of the film kind of happened in that walk. Came back home very excited. I remember calling Vinod and saying, I think I have a great idea. And he said, bata phone pe. He started saying. So the whole thing that here's a gangster who is in love with the voice on the radio, and she's doing a quiz on Mahatma Gandhi. So he wants to win that, and he has no idea what Mahatma Gandhi is. So he kind of kidnaps three professors and makes them help him to win that contest, and then he meets the girl. That happened in that one little walk. Seemed like a very interesting premise. And then Munna Bhai would want to know about Mahatma Gandhi, and he'll see Mahatma Gandhi, he'll hallucinate. All that happened. So I told that to Vinod, and he got very excited. He said, yeah, so work on it. And Abhijat came in between, and Abhijat, huge help all the time. राजू हिरानी और अभिजात जोशी की जुगलबंदी ने लगे रहो के इस ड्राफ्ट में काफी चेंजेस किए. When I met him, he actually narrated with something which was close to the first half of the movie as we see it now. So it was at a fairly advanced stage. At that time, what he had done was, Gandhiji was a ghost. He was a visitation. So Munna would sing the Raghupati Raghav Raja Ram, Ishwar Allah Tero Naam, and he would emerge. Then, this was in December 2003. And the first little thing that I felt at that time was that if he's a ghost, then it would appear as if we still need him to come back and guide us. Whereas the reality is that his ideas already exist. So, I just talked to Raju, what if it's not a ghost, but it's in Munna's brain? And in 1 second, he was receptive to get that idea. So, that was my first proof that Raju was so welcoming of new thoughts and how quickly he would adapt a new thing. वैसे इस कहानी को लेकर अभिजात जोशी का जो ऑब्सेशन था उससे काफी सीख ली जा सकती है. So that is how we started working together, and then I ended up reading 10,000 pages of Mahadev Bhai Desai's diary at that time.
No, Abhijat read every possible book on Gandhi. On that time. Because that time what was happening, that time the whole thought was to put everything in the film. It was almost 6-8 months of work. Then we realized it's finally a 2.5 hour film. And also the film is about Munna Bhai also. Thematically we're saying Gandhiji's ideology. So we can't really put everything. Then we had to narrow down everything and we said, okay, we'll stick to only 2 elements from Gandhiji's life, truth and non-violence. Period. Rest we can't actually get everything in. But in the journey, Abhijat did everything. There was a scene of fasting. So he fasted for a few days. He turned vegetarian for God knows many years. He tried, he said, I would feel how his body felt. Then at some stage we all worked on it and we did work for a very long time on it to get it right. So this one took a long time to write. Almost a year and a half we spent. लगे रहो का फेमस मोन्टाज राजू हिरानी के लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही आया था. You know, you can make a film or write a book about something, some ideology, some philosophy, but you have to make it believable to the audience that this can happen. So actually the biggest challenge in doing a film with Mahatma Gandhi was how do we make the world believe that his method, his ways of goodness, non-violent तरीके हैं वो आज के ज़माने में भी चल सकते हैं. his ways of non-violence will work. हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि लोगों को विश्वास हो कि ये चल सकते हैं. So we had done the whole script, but we were still feeling that we are saying it, but we are not demonstrating it. So eventually we spent quite a few months just devising 3 scenes. We said we need 3 scenes which should prove to the world that his maze can work. मैंने कहा 2-3 सीन ऐसे चाहिए demonstration जहाँ पे हो सके. And how they came around also is very interesting. Like that first scene, that Chhu scene. अब ये सीन बना, मगर ये सीन का बेसिस मैं याद करने की कोशिश करूँ तो When I first came to Bombay, I used to live with a friend of mine from the Film Institute. We were PGs in one place and we used to go out and eat. We used to go and eat out in the small Udupi restaurants. He would look at the waiter, it would be crowded places, he would look at the waiter and he says, इधर आ. और मुझे बड़ा embarrassing लगता था. I would like hide my face every time. मैं बड़ा embarrassed feel करता था. मैं कहता था ऐसे क्यों बुला रहा है? You know, I said, why are you calling it like that? और मैं रोज उसे कहता था यार तू ऐसे क्यों बुलाता है उसे? यार क्यों करता है तू ऐसा? Why do you do this? कहता है पैसे दिए हैं, प्रॉब्लम क्या है? सर यार पैसे देते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तू कहता था यार मैं पैसे दे रहा हूँ उसको आता नहीं है सारा. And he says, they don't listen. He would shout at them. And he continued doing that every time. हमेशा ऐसे करता था. Now this is one story which I must have narrated to Abhijat at some point. Out of context, a week, 10 days later, he told me a Gandhian quote. कभी अभिजात ने मुझे एक कोट सुनाया था कि गांधी जी ऐसा करते थे. He said a quote. He said, if you want to judge somebody, see how he behaves with people who are lower in strata than. अपने से कम तबके के लोगों से कोई कैसे बर्ताव करता है, उससे उसको जज करो. So now these were 2 different stories. तो अब ये 2 कहानियां एक्चुअली जुड़ गई. But somewhere in our brainstorming, these 2 stories got merged. To make a scene where this girl is there. This matrimonial scene where he tells him that, you know, if you want to judge the boy, see how he behaves with the waiter there. कुछ इस तरह ही फिल्म का पान वाला सीन भी लिखा गया था. So if you remember, there's a scene in the film where this guy, a neighbor who spits. He's a Paan and he spits. और ये हमारे साथ हुआ था. It was not exactly like this, but again it happened with my mother-in-law, where she used to stay in Bandra East in the Ramaji colony, where she was on the first floor. She was on the ground floor, and there was somebody staying on the first floor, and the maid or the lady up there the kitchen was just above her garden. So she would chop those vegetables and those eggshells, and every morning, afternoon, those things would be thrown out of the window and would fall into a garden. And the maid would yell from down. It would be fights every time. They would just fight. So what she did one day was, she didn't fight. She went and picked up those eggshells, picked up those cut vegetables, put it in a plastic packet, walked up the stairs, rang the bell. When the lady opened the door, she smiled and said, you know, I think you've dropped something down. Can I give it to you? She gave him this thing. Again, in Gandhi's case, we were trying to say that you have to shame. गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि shame the person. Gandhi used to say you shame your enemy with love and affection. उस आदमी को एहसास हो कि वो गलत कर रहा है. मारो मत. You know, the Gandhian way of dealing with it is don't get angry with him. Love is something which will disarm anyone, you know. And there was this guy who goes to take pension. So that's a form of protest. It's a form of a protest. He says, okay, I'm not going to fight with you, but I'm going to make you ashamed of your deed. That was a Gandhian way of protesting. These were not obviously referenced from anywhere. These were triggers from our life. They got modified. तो इस किस्म से वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो जुड़ जड़ा के सीन बन जाते हैं. तो मेजॉरिटी हमारे सीन्स ऐसे ही जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो बनते गए, शेप लेते गए. लिखते लिखते दोनों के मन में नई टेक्निक्स भी डेवलप होती जा रही थी. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ उल्टा कर. We had some techniques as we went along. Like one is Ulta Kar, the concept of Ulta Kar. So actually, you know, if you remember the scene where Munna sends a bouquet at Lucky's place and there is a card with it. So at first we had thought that the card should have the most stinging insults. So he writes a real stinker to Lucky, and we are trying to make that letter as funny as possible. I actually went to Churchgate looking at second-hand books of insults, you know, at that time. Somehow we arrived at this idea
that no, वो उल्टा कर concept है picture में, तो he doesn't send card a sticker, he actually sends a get well soon card. Sends a bouquet of flowers and a get well soon card. Bouquet of flowers and a get well soon card. Dishonesty is a disease and I need you to be cured. So we started discovering these little techniques of playing with the expectation and then reversing it or inverting it, and that creates something which is very unexpected. सोचो अगर 3 Idiots IIM के बजाय FTII में सेट होती। कुछ ऐसा ही आइडिया राजू हिरानी को भी आया था, बट इवेंचुअली चेतन भगत ने उन्हें अलग डायरेक्शन में इंस्पायर किया। 3 Idiots initially happened because I was actually wanting to do a film on the Film Institute because we've lived there, I've lived there, and picking up stories from real life is always more exciting. I feel they're more funny, they're more poignant. So I've always wanted to do a film on the Film Institute. But at some level I was thinking, will it be a very niche film? Will people understand the jokes about cinema which are very, a unit would understand? That was a question that I was never writing it. Then Mr. Bhagat gave me that book to read. क्यों? ये नॉवेल क्यों? उसी रीजन से कि लोग कहते हैं कि 3 साल में एक फिल्म बनाते हो। मैंने कहा इस बार एक नॉवेल उठाते हैं, और वो मुझे अच्छी लगी थी जब मैंने किताब पढ़ी थी, चेतन ने मुझे भेजी थी, तो मैंने कहा चलो इस पे, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ और हॉस्टल 2 में फिल्म इंस्टीट्यूट हॉस्टल में रह चुका हूँ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी है, एंड इन दैट आई सॉ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ आई हैड लिव्ड इन हॉस्टल। अपने आप को जोड़ पाया, उसे कनेक्ट कर पाया, मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है। So it seemed proper to probably shift the story from a film institute to an engineering college because that's a little wide. A lot of people know what engineering colleges are like. तो हमने ले ली ये सोची कि इस बार हमको कम लिखना पड़ेगा, हम जल्दी बनाएंगे फिल्म, क्योंकि कहानी में मजा आ रहा है। और फिर हमारा भी मामला वही, मेरा और अभिजात दोनों का ये इडियट जैसे ही हम भी दोनों, जब हम लिखने बैठे तो हमें लगा कि ये कहानी जो किताब में है उसको हम वैसे ही कहेंगे तो ये ठीक नहीं बैठेगी, इसको हमको सिनेमा के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सिनेमा में एक प्लॉट होना बहुत जरूरी होता है, तो उसके हिसाब से हमने उसको चेंज करना शुरू किया। जब कहानी खत्म हुई तो हमने देखा कि ये तो किताब कुछ अलग है और ये कहानी कुछ अलग बन गई। उस वजह से शायद वक्त भी लग गया। फिर हमने चेतन को बुलाया, हमने कहा अब ये कहानी ये है, आप फिर भी जुड़े रहना चाहते हो तो आप हमें बताइए, पर ये कहानी कंप्लीटली अब किताब से अलग हो चुकी है। बिकॉज अगर लोग थिएटर में जाएंगे सोच के कि हमने ये किताब पढ़ी और हम ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो उन्हें लगेगा नहीं ये तो कुछ और चल रही है फिल्म। तो चेतन ने कहा नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी एसेंस वही है तो वो जुड़े रहे। तो अल्टीमेटली फिल्म इज बेस्ड ऑन दिस फिल्म, बट आप जब देखेंगे तो वो कहानी काफी अलग हो चुकी है। अब मगर ये भी है कि अगर मैं किताब नहीं पढ़ता तो एक तो इंस्पिरेशन नहीं बनाता भी नहीं, पर मुझे लगता है कि जो हमने कहानी लिखी है वो सिनेमा के लिए करेक्ट है। करेक्ट, अगर हम वैसी की वैसी उठाते और हम वही करने की कोशिश करते जो किताब में है तो वो बहुत डिजास्टर होता। एक्चुअली ये चैलेंज भी रहा होगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ी तो मैं पहले खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो कहानी मिल गई। जब हम लिखने बैठे तो हमें लगा नहीं, हमें कहानी तो नहीं मिली, इसमें तो लिमिटेशन है। फिर हमने सीन्स मार्क किए, हमने कहा ये सीन इंटरेस्टिंग है, इसको हम रिटेल करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लिखते गए, कुछ दिनों तक वो सीन रहे, फिर जुड़ नहीं रहे थे, फिर निकलने शुरू हुए, फिर निकलने शुरू। अब अल्टीमेटली यानी बहुत ही कम बचा। वैसे रांचो का भी एक रियल लाइफ काउंटर पार्ट है। So this Rancho character actually came from a true life story in the Film Institute. वो FTII में in the 70s. वो अभिजात को रेनू ने बताया था, रेनू सरोजा जो एडिटर, हाँ, तो मुझे पता नहीं था, पर मैं उन शख्स को जानता हूँ, बाद में मैं मिला भी उनको। There were 2 people पंजाब से थे from a particular state who applied for the admission and direction course. One guy got in, the other guy didn't get in. They were friends. और जिनकी एडमिशन हुई उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कुछ, तो ये उनके नाम पे जाके उन्होंने फिल्म स्कूल में पढ़ लिया। He actually went on his friend's name, studied there for 3 years with a changed name, and went out and made films. और कहा कि मुझे क्या डिग्री थोड़ी, मुझे सिनेमा सीखना है, मैं सिनेमा सीख लूंगा और जाके बनाऊंगा। He said I don't need a degree, I need education. तो किसी और के नाम पे पढ़े और वो तो हमने 3 Idiots में यूज किया था। गांधीज्म की तरह ही एक और आइडिया से राजू हिरानी बहुत टाइम तक इन्फ्लुएंस थे। When I was writing PK, it just started from a germ of a thought that we wanted to talk about religion. We said like, okay, let's in this film talk about something which we very strongly believe. I think we strongly believed that this is something which has to be said, and it was coming from some conviction. It's something all of us question it every time, that who are we, why are we here on this planet, who are we, why are we on this planet, what is our purpose here, why were we brought here, where are we going, what is this concept of God, what is religion. We believe that it's a centuries people have grown with preconceived notions of how God should be or how religion should be, and it's coming from human beings. First of all, we don't know, we don't even know who's our creator. मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा confused हूँ, मुझे I wonder actually where did this whole concept of God came from. मैं कहता हूँ कि शायद हम में से किसी को कभी नहीं पता लग पाएगा कि भगवान है कि, मैं कहता हूँ कुछ पावर है जिसको हम शायद भगवान कहते हैं, पर इतने सारे जो भगवान हमने बना दिए मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। So both of us got completely sucked into this. This is a film we need to do. Somehow Abhijat and me always have been very fascinated with our own existence. क्योंकि हम 2004 में जब मिले पहली बार, तब हमें I think 3rd or 4th day we realized that both of us were fans of Mr. Abraham Kavur, who was anti-superstition, rationalist. I grew up in an environment where dad was completely a very rational man. His father is an extremely rational man. We had very strong views on the way we look at God, religion. So तब से ये एक बात थी मन में कि कभी इसके ऊपर फिल्म बना सकते हैं, तो that was a dream. And we said, okay, let's do something about this and let's put our views the way we see. But जितना अलग ये आइडिया था,
उतना ही मुश्किल एक ऐसे कैरेक्टर को लिखना जो इस आइडिया को रिप्रेजेंट करे। जब हमने शुरू किया इमीडिएटली आफ्टर 3 Idiots इस कहानी को लिखना शुरू किया। 3 Idiots is not yet released but we are mostly done with the work and we were taking a walk at Borivali National Park, Abhijat and me. We actually used to choose different places every day to walk. I strongly feel that if you are walking, something happens to your body and ideas come. The more you walk, more ideas come. So एक दिन हम निकल गए, हमने कहा ये फिल्म खत्म होगी, now let's take a walk in. और जैसा अभिजन का, we always look कि कोई unique story बोले. This was a film which began actually thematically with a theme. Thematically पता था हमको इस बारे में बात करनी है, uniqueness खोजनी थी. We had 3-4 ideas and then finally you have to zero down onto one idea and commit yourself to that idea because then it's a journey of 1-2 years to write that. So that morning I remember we committed to this idea which we had but it was just a very basic one-line idea. हमारे preconceived notion है religion के. आप हिंदू परिवार में पैदा हुए तो आपको लगता भगवान ऐसा है, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए तो आपको लगता खुदा ऐसा है. तो सबका जिसने जैसा बनाया वैसा सबका अपना भगवान वैसा बन गया. Then to communicate whatever we wanted to say thematically, we had to create a character through that character we could actually communicate whatever we wanted to. तो हमने कहा यार एक ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो जिसको ये पता ही नहीं हो, जो यहाँ पैदा ही नहीं हुआ. You said that before you made PK the alien, you thought he should be a rationalist. Yeah, but the reason to do that was then he'll be belonging to a particular community and then some other community will. पहले मुझे एक जंगल से एक आदमी आएगा जो रह गया था. करते finally अभिजात फैल यार ये alien is a great device. Why we chose an alien? The reason we chose an alien because we didn't want to give our protagonist a caste, a community, saying that he's either Hindu, Muslim or a Christian. We didn't want to question somebody else's belief. It's literally word by word you write, you say okay, you create a character, okay, an alien. तो वो डिवाइस मिला तो हमने कहा ये अच्छा है, we have a unique story. Okay, let's get him there. What will the alien do in his search for God? तो वो एलियन का डिवाइस मिल गया हमको कि यार ये इसके थ्रू कहेंगे तो इनोसेंट रहेगा. So he's like a child who comes on this planet who has no religion and he's in his journey trying to figure out what is this? Are we different? So when this thought came, suddenly it became an interesting story. If we were to see all these things through the point of a normal human being, it wouldn't have been as interesting. It's like a child, एक बच्चा पैदा होता है, उसका कोई religion नहीं होता, तो वो तो blank slate के साथ पैदा होता है. So you know you're literally starting from scratch. चलो आइडिया भी आ गया, कैरेक्टर भी मिल गया, बट इसके अलावा फिल्म को लिखने में जो दिक्कतें आई, आई विश कभी किसी राइटर को ना झेलनी पड़े. एक बार हमने दिया था उसको कि वो हाथ पकड़ के ये कर लेता है. एक और उसको हमने ये दिया था कि वी आर अ सम टोटल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, आवर बिलीव्स. तो अगर हम आपके कोई अंदर आपके घुस के आपका वो लाइफ का वो एक्सपीरियंस चेंज कर दे. इफ समबडी इज हेटिंग, कोई पार्टीशन में उसका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो कि जो हिंदू वहाँ यहाँ से तो पाकिस्तान से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, तो उनका एक बिलीफ हो जाता है कि हेटरेट शुरू हो गई. तो हमसे अगर हम पार्टीशन का एक्सपीरियंस उसका चेंज कर दें मेमोरी में जाके उसका, तो आदमी चेंज हो जाएगा. तो हमने पूरा सेकंड हाफ वो सोच के लिखा. आई थॉट वी थॉट कि हमने ग्रेट आइडिया क्रिएट कर दिया. फिर किसी ने कहा कि यार एक फिल्म आई है इंसेप्शन, जाके देख लो, शायद कुछ तुम्हारे आइडिया से मैच होता है. This is Christopher Nolan's Inception. Christopher Nolan's Inception. तो हम दोनों गए और हम थिएटर से उठे ही नहीं. यार ये तो मर गए अभी. Mr. Nolan messed it up. Yeah. Inception is the same idea. Our second half was going along the same lines. Done differently. Yeah, but the basic idea is that only. That you can change the thought. It was like a knockout punch. अब था कि अब क्या करें. ये पूरी हमको लग रहा था यूनिक आइडिया हमारी खत्म हो गई. Because we are so happy with this idea and we realized that we had to sacrifice that. बोला आप ये नहीं कर सकते कि सब लोग बोलेंगे चोरी की. Nobody will believe कि हम उस वक्त लिख रहे थे जब इंसेप्शन बन रही थी. कि हमको लगा इतनी अच्छी फिल्म बनी है इंसेप्शन, इतने लोग देखेंगे, जो लोग देखने हमारी फिल्म जाएंगे वो चोर बोले दैट इज ओके बट दे विल नॉट फाइंड अ यूनिक एक्सपीरियंस. उनको लगेगा यार ये तो देख चुके हैं. So we had to dunk that whole chunk and start rewriting. फिर हम लोगों ने लिखना शुरू किया. And then everything that we did post that, we knew that the natural progression from the first half to the second half, the uniqueness was cannot be achieved. So our best hope was to, with craft, but more than craft, with conviction, try to state things in as dramatic a manner as possible in the second half. फिर if you remember the film, वो एक पॉइंट पे आमिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है और पुलिस इंस्पेक्टर को मारता है. तो उसके बाद ये ऑफेंड हो जाता था हमारे स्क्रिप्ट में और वो कहता था यार ये क्या है, तुम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं कोर्ट जाऊंगा. एंड ही यूज्ड टू गो टू कोर्ट. एंड वी थॉट वी क्रैक्ड समथिंग ग्रेट कि अब नाउ विल मेक अ कोर्ट रूम ड्रामा, ही सूज गॉड. सो वी स्टार्टेड राइटिंग दैट. ये अभी पहली बार मैं बोल रहा हूँ, अभी तक बोल नहीं सकता था. फर्स्ट टाइम आई एम नाउ वी कैन ओपनली टॉक अबाउट द फिल्म. तो हमने वो लिखना शुरू किया. वी थॉट वी क्रैक्ड इट. नाउ great fun film we'll have. Abhijat's brother, who's also a writer in Ahmedabad, he writes plays. So he is aware of the script we were writing. So he told Abhijat, he says यार एक play है इस किस्म का, उसमें भगवान को सू कर देते हैं. परेश is doing that play. और उस टाइम हिंदी नहीं वर्जन रिलीज नहीं हुआ था, तो गुजराती प्ले था जी. तो मैंने अभिजात को बोला जाके तू देख ले यार, मुझे तो समझेगी नहीं. अभिजात वेंट, he said यार उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, सूइंग गॉड. तो हमने कहा ठीक है प्ले है ना, प्ले चलने तो प्ले चल रहा है, किसी ने किया कोई. तो हमने आगे कंटिन्यू किया उसको लिखना. फिर हमको पता लगा एक फिल्म है, ऑस्ट्रेलियन फिल्म है कॉल्ड मैन हू सूड गॉड, विच इज द सेम कॉन्सेप्ट कि वो फिशिंग बोट उसकी लाइटनिंग सही हो जाती है तो वो
वो जाके गोज टू द इंश्योरेंस कंपनी यार। करेक्ट। हाँ, तो हमने कहा यार अब साला ये फिल्म भी है, उसमें ये कहता क्या करें। उस बीच पता लगा हिंदी में परेश ने प्ले करना शुरू कर दिया, मेक अ फिल्म। तो हमने कहा यार अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं, इससे पहले बन जाए। परेश वेंट एंड शॉट इट सो फास्ट एंड मेड द फिल्म। हमने कहा फिर हम लोग ऐसा सर पकड़ के बैठ गए, हमने कहा अब ये नहीं कर सकते, पर हमने कहा हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकते, वी स्टिल हैव टू डू अबाउट गॉड एंड रिलीजन, बट लेट्स नाउ टेक अनदर पाथ। सो थर्ड टाइम अगेन वी स्टार्टेड राइटिंग एंड वी changed. So second half actually changed some 4 or 5 times. It is flawed because it just cannot not be flawed because we had broken the natural progression. इतने चैलेंजेस के बावजूद इन राइटर्स ने डिसाइड किया कि भले ही कितनी मेहनत लगे, ऑडियंस को तो एक फ्रेश प्रोडक्ट ही देना है। I mean, भले ही फिल्म को लेके जिसका जैसा भी ओपिनियन हो, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा पेशेंस और डेडिकेशन राइटर्स में बहुत कम देखने को मिलता है। See, PK was a difficult film to write. I mean, for the longest time, we felt that the film didn't work. Writing went through many dark days. You might have dark days when you don't get those ideas. Ideas won't come. You have to strive harder. We would worry whether we're on the right path. But you'll find that idea seeping in some other way, in some day. Writing was very tough on this. Frustrating होता था कि यार ये क्या हो रहा है अपने साथ। Of course, it was frustrating. It was very frustrating. तब मैं अपने आप को ऐसे याद दिलाता था कि जब when Darwin was writing his great thesis on the evolution, Wallace was also working on the same. तो इतनी बड़ी बात में जब तो हमारी तो बहुत छोटी सी एक एफर्ट है, इतनी बड़ी बात में कभी ऐसा हो जाता है कि लोग लाइफ लॉन्ग रिसर्च करते हैं और तभी उसी किस्म का आइडिया किसी और को आया होता है और उनका जो रिसर्च है वो वेस्ट हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। उसके सामने हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट वो सेटबैक से अगर आप हार गए या फ्रस्ट्रेट होके बैठ गए तो इट्स नॉट राइट। एंड आई न्यू दैट वी वर फॉलिंग शॉर्ट समवेयर। वी हैव टू फाइंड अनदर पाथ because we believe in the theme. So our belief, what we are trying to say is going to be different. It's our own voice. Let's not be hampered by the path. Find another path. Find another story. But let's not kill the voice. But we had worked so hard on it. We had worked so hard on it that at a certain point I started feeling that whatever we needed to state is coming out very beautiful. और अंत में जब रिलीज हुई मुझे लग रहा था कि हम 100% सक्सीड नहीं हो पाए। I said we strived hard. It's not that we've given up. We've strived very hard. But I think we never reached there. कल अभिजात ने बड़ी अच्छी बात कही। इसे हमारे he put it better. He said maybe our talent was lacking somewhere that we didn't strive that. इसे हमने एफर्ट में कमी नहीं डाली, शायद हमारे टैलेंट में कमी थी। But we are lucky that people still took it in the stride. आगे चल के औरों के सजेशंस पे राजू हिरानी ने पीके की एंडिंग इम्प्रोवाइज की थी। Like when we did PK, we shot the film. Earlier the film was ending with Aamir going away and the girl reading the bookshop that he left. The film used to end there. And whenever we showed the film in some test screenings, everybody said it's too sad, we don't like, he should not leave. So it was a very sad scene. And this was consistently coming to us. So we actually went ahead and rewrote. So we said he has to leave. I could have ended the film there. The story doesn't end if it doesn't leave. But what I can do, I can get him back. But I just wanted people to leave the theaters with a smile. So I actually took the shots from the beginning. We brought that beginning cloud landing again. Wrote a voiceover on it. So I just put those shots back, and when he lands, the clouds move, and instead of Aamir, so you're expecting Aamir to come out and instant Ranbir comes out, so you get an instant smile. So there was a smile on the face, and he was warning them about how to deal with human beings and gods. Basically, you leave with a smile on your face. So we had the liberty to change it the way we want. Till last week we were still feeling okay that one voiceover can change. We can change that one line, and how many times you called Aamir to come and dub again. So we kept on doing those things. अच्छा, ये आइडिया सेम निकलना सिर्फ पीके के केस में नहीं हुआ, वो तो अल्टीमेटली चलो रिलीज हो गई, बट एक अनरिलीज फिल्म का आइडिया भी इसीलिए स्क्रैप हुआ क्योंकि वैसी कुछ फिल्में ऑलरेडी आ चुकी थी। मुन्ना भाई चले अमेरिका, मुन्ना भाई की जो नई इंस्टॉलमेंट है वो शुरू करने वाले हैं। हमने लिखना शुरू किया है। मुन्ना भाई चले में काफी हद तक लिखी हुई थी, कुछ दिन पहले अभिजात और मैं, अभिजात यहीं पे हैं, हम लोग मिले, फिर हमने अपना वो सुबह वॉक लेना थोड़ा सा शुरू किया, थोड़ा सा सोचना शुरू किया। 2 स्क्रिप्ट हैं, एक मुन्ना भाई चले अमेरिका है और एक और स्क्रिप्ट है, तो दोनों पे थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। इनफैक्ट मैं अभी कल परसों चला जाऊंगा, कुछ दिन बाहर हम लोग रह के एक बेसिक ढांचा बनाएंगे। मुन्ना भाई अमेरिका चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं, फिलहाल रियलिटी ये है कि मुन्ना भाई चले अमेरिका नहीं बना रहे हैं। I'll tell you now, I think we can openly tell the story also. Yes. क्योंकि we're not making that now. उस फिल्म में ये होता था, सर्किट फॉल्स इन लव विद अ वुमन दिस टाइम। तो शादी के दिन पता लगता है कि उसके जो माँ बाप हैं वो मुस्लिम्स हैं, वो कहीं से उनको ढूंढ के पहुंच जाते हैं शादी के दिन। तो जो लड़की वाले हैं वो कहते हैं यार ये मुसलमान से शादी होगी, तो मुन्ना कहता है यार ये अब हिंदू मुस्लिम ये नहीं, कल तक तो ठीक था, आज क्या हो गया, चेंज हो गया। कहते नहीं यार हम ये शादी नहीं करवा सकते, मुस्लिम ऐसे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। ये कहता किसने कहा यार टेररिस्ट होते हैं? सब कहते हैं यार, जॉर्ज बुश भी कहता है। तो मुन्ना कहता है यार गलत कहता है, उसको सॉरी बोलेगा जॉर्ज बुश।
तो उस लड़की का जो फादर है वो कहता है कि ठीक है वो सॉरी बोलेगा तो मैं करवा दूंगा, बिकॉज ही नोज इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। हाँ, तो वो कहता है वो सॉरी बोलेगा तो मैं करवा दूंगा। तो कहता है ठीक है यार तू टेंशन मत ले, मैं उसको बुलाता हूँ। कहते हैं लेके आओ यार जॉर्ज बुश को लेके आओ। तो मुन्ना को आइडिया नहीं जॉर्ज बुश कौन है, तो वो कहते हैं वो सर वो तो अमेरिका का मुन्ना भाई, वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो कहता है यार ये क्या बोल दिया, कहता है आप बोल दिया तो ठीक है अब उससे बुलवाना ही पड़ेगा। तो दे गो ऑन अ जर्नी टू अमेरिका टू मीट मिस्टर बुश एंड टू से कि यार दिस इज रॉन्ग, दिस परसेप्शन दैट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। तो देन वी वर होपिंग अ फनी राइड इन अमेरिका एंड दिस थिंग। पर फिर मुझे लगा कि उस किस्म की कुछ फिल्में ऑलरेडी बन के आ चुकी हैं। उसमें भी एक चेस था प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए जो माय नेम इज खान में हो गया। So yes, there was a similarity in that ride, but ours was a funnier take. Correct. Theirs was a more serious take. सिंग इज किंग में भी एक था कि एक आदमी वहां जाता है। तो मुझे लगा कि वो टेरिटरी में अब मुझे नहीं जाना चाहिए। एक तो वो हो गया और दूसरा the reality is कि we couldn't, the setup was good but we couldn't crack the second half. So also this theme of Hindu Muslim, we suddenly when we thought of this alien, suddenly it lent itself much better to that because it was a completely unique idea. So we got excited about that. Let's present it through this lens rather than the Munna Bhai lens. You know. एक दूसरी मुन्ना भाई फिल्म हम लोग जरूर बनाएंगे। अच्छा वो जरूर बनेगी विद संजय दत्त एंड अरशद वारसी। कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब, कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? राजू हिरानी के सारे फिल्म आइडियाज हमने डिस्कस कर लिए। अब स्क्रिप्ट लिखने पर उनकी एडवाइस सुनो। स्क्रिप्ट सबसे अहम तो है लेकिन सबसे कठिन भी है स्क्रिप्ट को लिखना। मुझे लगता है कि सबसे कठिन प्रोसेस स्क्रिप्ट राइटिंग ही है। कई बार कुछ कहानियां मिल जाती हैं जो जल्दी से बन जाती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, उसको फिर कुरेद के निकालना पड़ता है। फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है। नो फिक्स टाइम यार, सम स्क्रिप्ट्स गेट रिटन फास्टर, सम फिल्म्स जस्ट डोंट एंड। मुन्ना भाई MBBS में उतना वक्त नहीं लगा था, लगे रहो में ज्यादा वक्त लगा था। लगे रहो वाज वन व्हिच टुक वेरी लॉन्ग फॉर अस टू राइट। Look back at Lage Raho, there'll be 100, 102 drafts, 105 drafts. I've realized when you have a unique setup, the setups are interesting, then it's a very tough film to write always. Like Lage Raho was a unique setup of a fictional character like Munna Bhai meeting a historical real character. So when you get fascinated with an idea, the setup is interesting, then to reach the culmination is always very difficult. How do you beat the setup? How do you take it to a climax which is better than your setup? Standard ideas actually is easier to find the end and yeah. 3 years में टाइम लगा था, जल्दी हो गया था। फिर भी एक बेसिक ड्राफ्ट तो जल्दी हो गया था। When I look back, Munna Bhai MBBS or even 3 Idiots got written much faster. एक 3 Idiots हमने 18 दिन में लिख ली थी, पूरी कहानी हमने 18 दिन में लिख ली। ये किससे होंगे, कि ऐसा किस्सा होगा, ये रैगिंग ऐसी होगी, वो एक उसका स्पीच चेंज कर देगा, वो बलात्कार चमत्कार वाला सीन ऐसा हो जाएगा, वो इंटरव्यू दे देगा, ये और ये सारी अपनी लाइफ से पिकअप किए हुए सीन्स थे, हम देखा था कहीं तो ये हो जाएगा। मगर उसको वीव करना, उसको एक ढांचे में ढालना, उसमें 1 साल लग गया। PK took the longest. PK took the longest because you can see the gap. PK took the longest and it's a frustrating feeling. It is. I actually we don't even keep a count of the amount of drafts because deep within when you know it's not working, so what is the point of going and shooting it? There are dark days as I keep saying कि कई दिन ऐसा होता है कि कुछ आप पूरा दिन बैठे रहे, आपको एक भी आइडिया नहीं है। If you just want to go out there and shoot a film without being happy with your script, then it's a different matter altogether. But when you write your first draft, there's so many extra lines which you have to finally say no, this will not hold, this will not hold, remove. So you edit at the scripting stage. So you know now this scene is tight. This is the point you are trying to make. Is there. And if you're in that world, I think your objectivity is still there. So when you see an idea which is better than the earlier one, you can immediately see, this is better. You might have scenes or you might have lines which are very tempting to use. They might be funny. They might make another point, but you say no. Hold it here. I'll cut it here. I won't use it. Of course, you have to see the implications of it in the something you change. Sometimes it can have implications in the beginning of the film, in the end of the film. That you have to be careful. But if you're living in that world, you'll immediately see the implications. You know exactly where all this. There were theories in this film which I was very fascinated with. I had to cut them out. I said, like it was like always. Well, I had something else which I'll probably use in the next film. But as long as anything which can help the film, it can take it ahead. I never worry about sacrificing anything for it. You might have shot something which is not working seamlessly, throw it away. So I had to say no. Temptations apart. Keep the script scene tight. So if I'm getting a better idea, I will quickly jump into it. And every day a new idea keeps coming. The thing is, there's never an end. There will be a new idea hitting you every day. I remember Abhijat asking me one day, which was so funny. 3 Idiots had released, and we went to a theater to see some reactions of the people, and we were watching, and suddenly Abhijat said, "Hey, this voiceover is not correct, yaar. We should have written something else." So I said, "Yeah, that's a great line. We should have thought of it." He said, "Can we do it now?" I said, "It's released." So he says, "Can we do it in the DVD at least?" So scripting doesn't end. If you ask me, scripting never ends. You have to abandon it at the release day and say, okay, now it's over. Because ideas keep coming. There's never an end to that. तो अल्टीमेटली राजू हिरानी और अभिजात जोशी की स्क्रीन राइटिंग 2 चीज़ों पर डिपेंड रहती है, मेमोरी एंड आउटरेज। हम लोग कहानी थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी कहानी। तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में गया, मगर वहाँ एडिटिंग की, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में कुछ अधिक सीखा नहीं, कुछ किताबें पढ़ी और गट से लिखना शुरू किया।
I always feel there are two ways of selecting an idea. One is actually you kind of dig into your experiences and your memories. क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं हमारी जिंदगी में कुछ हुआ हो या हमारे किसी दोस्त के साथ हुआ हो, कुछ अखबार में 20 साल पहले पढ़ा हो. Because of the experiences you have tons of memories inside you. लेकिन अगर वो हमारे माइंड में रह गया हो तो उसकी एक वैल्यू, ड्रामेटिक वैल्यू है. You would have forgotten, 90% of it, but you will remember only some very specific memories because they were worth remembering. या तो ह्यूमरस वैल्यू है या इमोशनल वैल्यू है, ड्रामेटिक वैल्यू है. That's the reason it attracts you. इसीलिए वो चीजें हमें याद रहती है. जो ऑर्डिनरी चीजें होती है हम भूल जाते हैं. It's just that when we find a subject and if you try to focus, those memories will come back to us. Will come back. तो हम दो चीजों पे डिपेंड करते हैं. एक तो मेमोरीज क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है, एक एक्सपीरियंस की लाइफ के, और दूसरा आउटरेज. A lot of things like with fraud of any kind, with fear of any kind. So when you think of a subject, you feel, oh, I know this about this, I have anecdote like this, I have a story like this, I can put it together and make a film. फिर हम 2-1 महीने इन आइडियाज के बारे में बात करते हैं कि अच्छा ये आइडिया को हम कैसे पेश करेंगे. फिर हम लोग बैठ जाते थे साथ में या निकल जाते थे वॉक करने. वो वॉक करते करते हमने कुछ सीखा कि वॉक करते हुए बड़े अच्छे आइडिया आते हैं. कुछ होता है बॉडी में केमिकल रिएक्शन, कुछ की सीरियसली बड़े अच्छे आइडिया आने लगते हैं. So is there something like you got up from the right side of the bed and the wrong side of the bed? हाँ, it's literally like that. कि एक बार तो इतना चलते थे, एक बार मुझे याद है हम लोग एक दिन 7 घंटे चले. तो अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा, 11 बजे उठा. मैं यार ये बड़ी थकान सी क्यों हो रही है आज. फिर उसने याद दिलाया कि 7 घंटे चल रहे थे. स्पेसेस का भी होता है. कई बार लगता है यार वो ये जगह पे बैठो. आप सुपरस्टिशियस नहीं, मैं बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, पर मुझे लगता है स्पेसेस का कुछ एक होता है. Like I sit with Abhijat and write. So if I sit with him, I narrate him something about my college days when we were writing 3 Idiots. Then he'll narrate some story about his college days, which will trigger another memory, and I'll go back to something else. So we need triggers to go back to our memories. कोई स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन नहीं होता था. कुछ भी बात करने लगे. उसमें ऐसा लगा यार ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा, इसका सीन बन सकता है. उसको शॉर्ट कर दिया. So once you brainstorm with somebody, tons of those memories come back to us. तो उसमें 6 वीक्स या 8 वीक्स चले जाते हैं. तो जैसा आपने कहा एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग होता है कि आप एक स्टोरी डिसाइड कर लो, एक कहानी होगी और यहाँ से शुरू होगी, यहाँ प्लॉट पॉइंट आएगा, यहाँ इंटरवल होगा, यहाँ ड्रामेटिक आना चाहिए, उसका एक प्रोग्रेशन होना चाहिए. तो पहले आप एक स्ट्रक्चर कर लेते हो, उसके बाद लिखना शुरू करते हो. तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं. स्क्रीन राइटिंग में सबसे कॉमन रूल 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है. इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात की है. बेसिकली 3 एक्ट स्ट्रक्चर किसी भी फिल्म की कहानी को 3 हिस्सों में बांटता है. बिगिनिंग, जहां फिल्म को सेटअप किया जाता है. मिडिल, जहां फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है और जहां धीरे धीरे इस कॉन्फ्लिक्ट के स्टेक्स बढ़ाए जाते हैं ताकि हमारा कैरेक्टर वर्स्ट सिचुएशन में आ जाए. एंड फाइनली एंड, जहां कैरेक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं. ये टेक्निक बहुत यूज़ होती है, बट फ़र्क ये है कि सारे राइटर्स इसे पूरी फिल्म पे अप्लाई करते हैं और राजू हिरानी अपने हर सीन पर. तभी हमें उनके सीन्स अपने आप में ही अलग अलग किस्से लगते हैं. राजू हिरानी की फिल्मों का हर सीन अपने आप में ही एक मिनी फिल्म है. फॉर एग्जांपल मशीन वाला सीन. शुरुआत में सीन को सेटअप किया जाता है क्लास का मेन क्वेश्चन और रैंचो का प्रॉब्लम के टूवर्ड्स सिंपल अप्रोच बता के. यहाँ पे सीन का मेन कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है, यानी टीचर का रैंचो के सिंपल अप्रोच को अपोज करना. डेफिनेशन क्या है? उसका रैंचो का मजाक उड़ाना और चतुर के कॉम्प्लेक्स अप्रोच को प्रेस करना रैंचो के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट के स्टेक्स और बढ़ा देता है. और अल्टीमेटली क्लास से निकलने पर वो अपनी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन फेस करता है. आसान भाषा में भर जाइए. यहीं से फाइनल रेजोल्यूशन चालू होता है क्योंकि रैंचो को इस कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने का सोल्यूशन मिल चुका है. क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, standing, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. एंड फाइनली सीन में सेटअप हुआ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है. तो ये हमको किसी और ने पिन पॉइंट किया, हमारा ध्यान भी नहीं गया उस पर. उन्होंने कहा कि आपके फिल्मों में ऐसा लगता है कि आपका हर सीन एक कहानी है और सीन एक बिगनिंग मिडिल एंड है. ऐसा नहीं है कि कई बार कनेक्टिंग सीन होते हैं ना, यहाँ से कहानी शुरू हुई, उसको कनेक्ट करने के लिए तो एक सीन आया, फिर एक बड़ा इवेंट आया, फिर ऐसा जुड़ती है. जैसे आपके फिल्म में कनेक्टिंग सीन्स दिखते नहीं, आपका हर सीन ऐसा लगता है एक कहानी है, वो गैग है, वो बाय इटसेल्फ इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमको पता नहीं लगता कहानी किधर जाएगी. तो ये हमने कॉन्शियसली नहीं किया, ये अनकॉन्शियसली किया, यानी सबकॉन्शियसली होने लगा. मगर उसमें एक चीज समझ में आई कि ऐसी कहानियां लिखनी बड़ी मुश्किल है. इस वीडियो में हमने मूवी आइडियाज़ और स्ट्रक्चर डिस्कस किया. आने वाले वीडियोस में हम राजू हिरानी के फिल्मों के कैरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए तुम लोग राजू हिरानी की फनी पोएम सुनो. इनके ऐशो आराम देखकर हमारा मन भी ललचाया. हमने सोचा हम भी एक टांग तोड़वा लें, इसी बहाने एक कमरे में हम भी एंट्री पालें. उसी रात को हमें आ गया 103 बुखार. अब बुखार की रात भी अगली सुबह के इंतजार में हम मुस्कुराए. दूर अंतरिक्ष के तारों के बीच मंदराटे कमोट नजर आए.
This is horrible. Yeah.